सिक्स चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव लास्ट एक्सरसाइज है और इसका चैप्टर का एंड बिल्कुल पास है। एमसीक्यूज में हम आए हुए हैं। 27th क्वेश्चन इज द पॉइंट ऑन द कर्व x square equal to 2y which is nearest to the point। समझ में नहीं हट बात है मैं भी हट अपना बुक लेके पढ़ो बेटा माइक ऑफ रखो सभी अपना। फोकस में रख के काम करने का हट अभी नहीं करेंगे। मैं घर में चिल्ला रही हूँ, शांति रखो आप। Question 27, the point on the curve x square equals to 2y which is nearest to the point 0,5। एक कर्व है x square equals to 2y, given curve is x square is equals to 2y and we can identify this is an equation of a parabola, means एक parabolic curve है। This is the curve which is a parabola and the question is find a point on this curve। इस कर्व के ऊपर एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना which is nearest to the point 0,5 पॉइंट y एक्सिस के ऊपर। this is the point 0,5, let us suppose this is the point 0,5। now the question is that find a point on this curve। इस कर्व के ऊपर ऐसा पॉइंट फाइंड करना है which is nearest to this point, जो इस पॉइंट के नियरेस्ट हो। इस कर्व के ऊपर ये पॉइंट भी है, ये भी है, ये तो बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं बट हमें वो पॉइंट फाइंड करना है जो नियरेस्ट हो। नियरेस्ट मींस जिसकी डिस्टेंस मिनिमम हो। Let us suppose this is a point, this is the given point P and let us suppose this is the point Q which is x and y on this curve। इस कर्व के ऊपर हम एक पॉइंट Q मान लेते हैं। Then according to the question this distance should be minimum। We have to find this point Q such that the distance PQ should be minimum। हमें point PQ फाइंड करना है, वो point Q ऐसा होना चाहिए कि इसकी डिस्टेंस क्या हो, मिनिमम हो। ओके So we have to find a point on this curve such that its distance from the point 0,5 is minimum from this point। So let us suppose this is the point xy। Let point xy, let the point Q which is xy on the curve which is curve number 1। Let us suppose this point is on the curve। Now according to the situation the distance of the point P from the point Q should be minimum। Then the distance of point P and Q, distance, this is the distance PQ, should be minimum। PQ distance is distance formula x2 minus x1, that is x minus 0 square plus y2 minus y1 square, y minus 5 square under the root। This is the distance। So this is distance should be minimum। This is the required situation। Okay, let us suppose represent it by d, squaring both sides squaring करते। let us suppose represent it by d square। Then x minus 0 square is x square plus y square plus 25 minus 10y। On squaring both sides, this is the distance। If we are not squaring, let us suppose this is represented by the distance d। Now squaring both sides, we got d square is x square plus y square plus 25 minus 10y। Okay. Now we have to find the point such that distance is minimum। If the distance is minimum, then if this distance is minimum, then we have to differentiate this distance को differentiate करेंगे। But before differentiation, we are finding that there are two variables x and y। So first of all, we have to eliminate one variable, and which can be eliminated with the help of equation number 1। We can put value of x square as 2y। So using equation number 1, we can put the value of x square which is 2y plus y square plus 25 minus 10y। So we find now the equation is have only one variable which is y। Now we can differentiate it easily। Okay, so y square minus 8y plus 25। Now we can differentiate it easily। To differentiate
with respect to the variable which is here y. Y के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं. डेरिवेटिव ऑफ d स्क्वायर we can write the derivative as 2d derivative of power into derivative of distance d upon with respect to y, or we can also write it as, let us suppose this is another variable, इसको हम कोई और variable मान लेते हैं. Let us suppose it is variable p. Okay, so we can differentiate it directly. So हम d square का derivative as it is भी लिख सकते हैं. That is not the problem. So now the derivative y square 2y minus 8 into y का derivative 1. This is the derivative of the given function. Now to find the critical point, to find the turning point, we can differentiate it. We can put it equals to 0. So put derivative of distance equals to 0. So we find that 2y minus 8 is equals to 0. 2y minus 8 is equals to 0. On simplify, we find y is equals to 4. And if y is equals to 4, to check whether the distance is minimum or maximum, we have to differentiate it again. Differentiate it again with respect to y. Differentiate equation number 2 with respect to y. We find the second derivative of d square. Derivative of second derivative of d square is 2 into y derivative 2, 8 का derivative 0. So we find that this derivative is positive, and positive means d square is minimum. So d square is minimum. d square जो है वो minimum होगा, और d square minimum है, d is also minimum. So distance d is also minimum. तो distance d जो है वो minimum होगी, means distance of PQ is minimum. And what is the point? And the point is to find point, put the value of y in equation number 1. So we can find value of x. X square is equals to 2 into y, means 2 into 4. So x square is equals to 8. We can find x is equals to plus or minus 2 root 2. Okay, but as the parabola is in the positive direction, we will take only the positive 2 root 2. We will not take negative 2 root 2. So because the point 0.5 is on the y-axis, so it will be positive 2 root 2 minus x 2 root 2 from it can be here and here. These are the 2 points. ये दो पॉइंट हो सकते हैं, वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है. So point is x is 2 root 2 and y is 4, or x is minus 2 root 2 and y is 4. These are the 2 possible points which are at minimum distance from the point 0, 5. ऑप्शन में सिर्फ पॉजिटिव 2 रूट 2 और 4 गिवन है, इसलिए ये आंसर हो जाए. क्योंकि एमसीक्यू था, तो जो आंसर में गिवन है हमें वही सिलेक्ट करना होगा. दिस इज गिवन, सो दिस इज द पॉइंट व्हिच इज एट मिनिमम डिस्टेंस. ये आंसर ऑप्शन में गिवन ही नहीं है, तो इसको हम छोड़ देते हैं. दिस इज द आंसर. So in the complete topic, method is same. We have to find the variable, we have to find which quantity is to be minimized or which quantity is to be maximized. हमें सिर्फ ये फाइंड करना है कि किस क्वांटिटी को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है. इसमें था डिस्टेंस को मिनिमम फाइंड करना है, तो हम उसकी डिस्टेंस फाइंड करेंगे. कर्व गिवन था, पॉइंट गिवन था, हमने कर्व के ऊपर एक जनरल पॉइंट मान लिया, एज्यूम कर लिया. So the distance of that point from the general point, this is the distance. डिस्टेंस मिनिमम पूछिए तो डिस्टेंस को डेरिवेटिव करेंगे हम. इसको थोड़ा सिंपलीफाइड फॉर्म में कर लिया, रूट को एलिमिनेट कर लिया ताकि डेरिवेटिव हमारे लिए इजी हो जाए. रूट एलिमिनेट करने के बाद हम देखते हैं कि इसमें 2 वेरिएबल हैं. सो वी हैव टू एलिमिनेट 1 वेरिएबल. मेन सिचुएशन यही है कि इसमें से एक वेरिएबल हमें एलिमिनेट करना होगा, और वो वेरिएबल एलिमिनेट कहां से होगा, उसके लिए हमें क्वेश्चन में गिवन कंडीशन फाइंड करनी पड़ेगी. दिस इज द गिवन कंडीशन, x square equals to 2y. So put x square equal to 2y. Now we have the only one variable, we can differentiate it easily.
डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल विच इज y, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट फाइंड करेंगे टू फाइंड द टर्निंग पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट, पुट इट इक्वल्स टू 0, वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। पॉइंट पूछा था y के साथ x भी चाहिए, तो हम x भी फाइंड कर लेते हैं। y की वैल्यू 4 जो है वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट अप करेंगे तो x भी आ जाएगा हमारे पास। उसके साथ साथ ये भी चेक करना है कि डिस्टेंस मिनिमम है या मैक्सिमम, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है डिस्टेंस शुड बी मिनिमम। क्रिटिकल पॉइंट तो हमें सिर्फ ये बताता है कि वहां पे, या टर्निंग पॉइंट वो बताता है कि उस पॉइंट के ऊपर वो कर्व जो वो टर्न हो जाएगा, लेकिन वो कर्व डाउनवर्ड से अपवर्ड टर्न हो रहा है या अपवर्ड से डाउनवर्ड वो हमें नहीं पता। मींस वो पॉइंट मैक्सिमा है या मिनिमा ये नहीं पता, सिर्फ हमें पता चला कि ये टर्निंग पॉइंट है। वो टर्निंग पॉइंट मैक्सिमा भी हो सकता है, मिनिमा भी, एंड वी हैव टू चेक दैट। For that we have two tests, first derivative test or second derivative test. We have used here the second derivative test. Differentiate the first derivative, this again with respect to variable y. So second derivative positive means distance is minimum, second derivative negative ho maximum, here it is positive, so distance is minimum, और distance minimum है तो point क्या होगा, x और y की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। point क्या था, x y था, this is the point, तो ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। दिस इज द मेथड व्हिच इज यूज्ड इन द कंप्लीट एक्सरसाइज। पूरी एक्सरसाइज में एक ही चीज चल रही है कि किस चीज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, वो चेक करो, फॉर्मूला लिखो उसका क्या बनता है, ठीक है। अब उसमें कितने वेरिएबल है ये चेक करो, अगर 2 वेरिएबल है तो एक एलिमिनेट करना होगा, और वो एलिमिनेट कहां होगा, क्वेश्चन में जो गिवन सिचुएशन है, जो गिवन कंडीशन है, उनकी उसकी हेल्प से वेरिएबल एलिमिनेट करो। नाउ वी कैन डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट करो, 0 पुट करेंगे तो अपने पास टर्निंग पॉइंट आएगा, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा मैक्सिमम है या मिनिमम, और फिर टर्निंग पॉइंट की हेल्प से गिवन रिक्वायर्ड आंसर भी निकाल देंगे। ये 3-4 स्टेप है, पूरी एक्सरसाइज में यही यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन 28। यहां इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम है? इफ एनीवन हैव द प्रॉब्लम यू कैन आस्क। है कोई प्रॉब्लम किसी को? एनीवन? आवाज आ रही है ना सबको? अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है देन रेस्पोंड है। भुवनेश्वरी, प्रेम, मोहित, सुजल, सेजल, एनीवन? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, अदरवाइज मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कराऊं। रेस्पोंड तो करो एटलीस्ट, अगर क्लियर है तो यस सर इट इज क्लियर, अदरवाइज ओके देयर इज प्रॉब्लम। यस सर। नो सर। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो अब आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the question is for all the real values of x, the minimum value of the function, we have to find the minimum value of the function. If function given है which is a rational function, means polynomial divided by polynomial, इस फॉर्म में एक फंक्शन गिवन है, we have to find the minimum value of that function for all real number. In case of all real number, find the minimum value of that function, and the function is given as, function fx is given as 1 minus x plus x square divided by 1 plus x square. We have to find the minimum value of this function. Method is again same. We have to find the derivative. Put, सबसे पहले हम चेक करेंगे वेरिएबल कितने इसमें, there is a single variable, only x वेरिएबल है, we can differentiate directly. So differentiate with respect to x, put the derivative equals to 0, we will find the turning point, and then check the maximum or minimum condition. Second derivative, with the help of second derivative, put the critical point. If it shows positive or negative, we can find it is maximum or minimum. So first of all, as there is only one variable, differentiate with respect to x. So f dash x is differentiate with the method of quotient rule. There are two polynomials which are in the ratio. So rational function u upon v method, quotient rule, v remains the same, and the derivative of u d upon dx of 1 minus x plus x square, minus u remains the same, 1 minus x plus x square, and the derivative of v which is 1 plus x square,
divided by whole square of the denominator, which is 1 plus x square, it's a whole square. So we find 1 plus x square is same derivative of 1 minus x plus 2 plus x square. Derivative 1 is 0, minus x का derivative 1 और x square its derivative is 2x minus 1 minus x plus x square. Derivative of 1 is 0, derivative of x is 1, and derivative of x square is 2x, and denominator is same 1 plus x square whole square. We can simplify it. It is minus 1 plus 2x and minus x plus 2x square, then minus x square, then plus 2x cube. And in the second bracket it will be 1 plus 2x, then minus x and minus 2x square, then plus x square and plus 2x cube, whole divided by the same term, which is 1 plus x square whole square. Now if the term are cancelable, plus 2x and minus x, 2x is 2x cancel out, minus x is minus plus x cancel out, and then 2x cube plus and 2x cube, this will be minus. Remaining terms को हम कैलकुलेट करते हैं, x square 2x square और minus x square plus x square ये बचेगा, minus 2 और plus 1 minus x square, minus already है plus x square है, so we get 2x square and minus 1 minus 2 divided by 1 plus x square whole square. This is the derivative of the function, or we can factorize it. F dash x is equals to 2 common out, x square minus 1 बनेगा, which is x minus 1 into x plus 1 divided by 1 plus x square whole square. This is the first derivative of the function. To find the critical point, put it equals to 0. Put this is equals to 0. On putting 0, the denominator go to the right side will become 0. So we find x is equals to either plus 1 or minus 1. There are two possibilities of x. Now we have to find its maximum or minimum value. Okay. As it is an MCQ type, we are not need to solve it completely. We are to solve it on the rough pace. Okay. MCQ टाइप है तो हमें डायरेक्ट सिर्फ आंसर्स देखना इसका क्या होगा, तो इन दोनों पॉइंट के ऊपर सी हम डायरेक्ट वैल्यू फाइंड करते हैं। इन दोनों में से दोनों पॉइंट के ऊपर, ये दोनों टर्निंग पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट है, तो इनमें से एक पॉइंट के ऊपर क्या होगा मैक्सिमम और दूसरे पॉइंट पे क्या होगा मिनिमम। ठीक है, तो इन दोनों में हम डायरेक्ट वैल्यूज फाइंड आउट कर लें और वहीं से हमें पता चल जाएगा कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी या मिनिमम। वी कैन फाइंड द वैल्यू डायरेक्टली एट दिस पॉइंट्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एट 1 and find the value of x at minus 1. 1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? It is 1 minus 1 plus 1 upon 1 plus 1 plus 1 1 upon 3, और minus 1 पे वैल्यू क्या होगी? minus 1 अपने पुट करते हैं 1 minus minus plus 1 and minus 1 square is plus 1 divided 1 minus 1 पुट अप करेंगे और minus 1 का square plus 1, so we get it is 3. So maximum value of the function is plus 3 and minimum value of the function is 1 upon 3. The question is what is the minimum value? So minimum value of the function is 1 upon 3. This will be the answer. इस function की जो minimum value है वो 1 upon 3 हो जाएगी. Means D option is the correct answer. Okay. After that, next 25th question. 29th question and the last question of this chapter. एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। Okay, the question is the maximum value of the function, and the function is x into, function is given as x into x minus 1 plus 1, its power is
1 upon 3, where x is given as x lies between 0 and 1. X lies on the interval 0 and 1. So find the maximum value of the function. To find the maximum value, we have to differentiate. Before differentiating, we can simplify it. It is x square minus x plus 1. Its power is 1 upon 3. Now differentiate it with respect to x. Differentiate it with respect to x. Differentiate करेंगे कैसा फंक्शन है? Polynomial power. So first of all, we will differentiate the outermost part of the function, which is power of the function. So power में डायरेक्टली करेंगे 1 upon 3 आगे आ जाएगा. Remaining part is x square minus x plus 1. Power में से 1 subtract करेंगे. 1 upon 3 minus 1, it will be minus 2 upon 3. And divided dx of the remaining part, d upon dx of the remaining part, which is x square minus x plus 1. Okay, मैं इसका डेरिवेटिव यहीं पे कर देता हूँ. क्या आएगा? तो मल्टीप्लाई इट्स डेरिवेटिव. व्हाट इज इट्स डेरिवेटिव? इट इज 2x minus 1, or the derivative is 2x minus 1 divided by 3. As the power is negative, so we can write it in the denominator. Its power will be 2 upon 3. Now to find the critical point, that is the turning point, put it equals to 0. Put f dash x equals to 0, means we will put it equals to 0. 0 put up करें तो ये right side जाके eliminate हो जाएगा. So we are left with 2x minus 1 equal to 0. On simplify, we find x equal to 1 upon 2. So we are having the turning points. Turning points are, or the critical points are 1 upon 2, जो कि 0 और 1 के इंटरवल के बीच लाई करता है. x की वैल्यू 0 और 1 के बीच ही रहनी चाहिए, which lies in the interval 0 and 1. इसका मतलब एक तो टर्निंग पॉइंट अपने पास ये होगा और दो टर्निंग पॉइंट ये खुद रहेंगे. So we are left with the turning points as 0, 1 by 2 and 1. So इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं कहां पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम और कहां पे मिनिमम, क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम हमेशा टर्निंग पॉइंट पे ही होती है और टर्निंग पॉइंट हमारे पास है. So find the value of the function at 0, find the value of the function at half, and find the value of function at 1. At 0, put up the value of x. So 0 minus 0 plus 1, it's 1 power 1 by 3, or 1 की power अपने पास 1 by 3 और it will be 1. Put half, 1 by 2 तो 1 by 2 का square 1 by 4 minus 1 by 2 and plus 1, it's power 1 by 3. On simplify, we get 4 LCM. This is 1 minus 2 and plus 4. Its power 1 upon 3. क्या बनेगा? Plus 5 minus 2 plus 3 upon 4. Its power 1 upon 3. And the next is value of the function at 1. Put x equals to 1. 1 put up करेंगे तो क्या हो जाएगा? X is 1. 1 minus 1. 1 minus 1 is 0 plus 1 means 1 power 1 by 3. It is 1. तो हमारे पास इसकी तीनों वैल्यूज आ जाती हैं. अब इनमें से हमने बताना है कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है, कौन सी मिनिमम. सिर्फ मिनिमम पूछी गई है. ओके, मिनिमम वैल्यू है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? व्हाट इज मिनिमम अमंग दीज थ्री वैल्यूज? 1 और 3 अपॉन पावर 1 by 3, 1 और क्यूब रूट ऑफ 3 अपॉन 4, क्यूब रूट ऑफ 3 अपॉन 4. 3 अपॉन 4 का क्यूब रूट क्या होगा? As 3 upon 4 in decimal form it is 0.75. Okay, और इसका क्यूब रूट क्या होगा? It is less than 1. 1 से लेस ही रहेगा ना. इसकी पावर अगर जैसे जैसे डिक्रीज होती जाएगी इसकी वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, बट जब तक इसका बेस 1 से कम है इट्स वैल्यू रिमेन्स लेस देन 1. इसकी वैल्यू 1 से कम रहेगी. अगर बेस 1 से कम है तो वैल्यू 1 से कम रहेगी. हाँ, अगर इसकी पावर माइनस में होती, if the power is negative होता, then it becomes like this, ये बदलता. तब इसका बेस 1 से ज्यादा होता और बेस 1 से ज्यादा है तो इसका रूट भी 1 से ग्रेटर रहेगा. चाहे कितनी भी फिर फ्रैक्शन में पावर आए 1 से ग्रेटर होगा. बट अभी बेस इसका 1 से लेस है, इट्स वैल्यू विल आल्सो बी लेस देन 1. तो ये 1 से लेस रहेगी और ये दोनों 1 के इक्वल है. तो मिनिमम वैल्यू इज
3/4 power 1/3. This is the minimum value of this function. ये हो जाएगी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू. ओके, एंड विद दिस द एक्सरसाइज इज कंप्लीट. ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है. इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बट बिफोर दैट आई वांट टू आस्क यू अबाउट योर प्रॉब्लम्स इन द करंट चैप्टर. करंट चैप्टर में अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स है इस चैप्टर में से तो आप पूछ सकते हो. आप इस चैप्टर में से अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, कहीं पे कोई भी चीज अगर नहीं समझ में आई है, देन यू कैन आस्क. बोलो बेटा, अगर इसमें किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो इस चैप्टर में से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव. एनीवन?